Welcome to the recording of Gala Standard Paper 2026, paper number 4. First objective, statement root phi is an irrational number. True. Second statement, if m is an odd number greater than 1, then root m is irrational number. m odd number है. Odd number होते हैं 3, 5, 7, 9. So if m is an odd number greater than 1, then root m is irrational, true or false. This is irrational, this is irrational, this is irrational, but root 9 is 3. This is a rational number, therefore this statement is false. Then you have to read the option and find the correct option. Statement X is correct but Y is incorrect. A. Second objective, graph of y is equal to px is given. Here the number of zeros of p of px is, number of zeros means wherever the graph touches the x-axis, it touches at one point, therefore number of zeros is 1. अब इस क्वेश्चन में many times you will see in the paper set कि एक गूगली फेंकते हैं और तुम क्लीन बोल्ड हो जाते हो y is equal to px या px is equal to y हो. This is a normal sum, and normal sum में we always focus on the x-axis. But sometimes they will give x is equal to py या reverse py is equal to x. If you see py, if you see a graph like this, don't look at x-axis, you have to look at y-axis. That is the trick. तो ग्राफ कट्स द वाई एक्सिस एट वन पॉइंट. जो लोग एक्स एक्सिस देखेंगे वो लोग 2 zeros बोलेंगे, बट दैट इज रॉन्ग. दिस पॉलिनोमियल डज नॉट हैव 2 zeros, इट हैज ओनली 1 zeros. You have to see the y axis, remember that. Third objective, 33x plus 27y is equal to 147. 27x plus 33y is 153. If you carefully see, एलिमिनेशन करना पड़ेगा. x और y की वैल्यू आ जाएगी और x और y की वैल्यू आएगी तो मुझे x माइनस वाई का आंसर मिलेगा. बट दैट इज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी because doing elimination of this equation is very difficult and long. Trick is add both the equations and in the second round subtract both the equations. So add and subtract. पहले हम ऐड करेंगे. 33 plus 27 is 60. 27 33 is 60. 147 153 is 300. 60 कॉमन और 60 जब सामने डिवाइड हो जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आंसर आएगा. स्टेप 1. स्टेप 2, subtract them. 33 minus 27 6x. 27 minus 33 minus 6y and 147 minus 153 is minus 6. 6 गायब, बचा x माइनस वाई इज 1. इसको एलिमिनेशन करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी. x आएगा 2, y आएगा 3. तो so many things can be asked. The value of x and y can be asked. x प्लस वाई पूछ सकते हैं और x माइनस वाई पूछ सकते हैं, उनकी मर्जी. उन्होंने यहाँ पूछा है x माइनस वाई. दिस इज x माइनस वाई. आंसर इज -1, ऑप्शन डी.
Fourth objective, the roots of the equation so and so are x square minus 5 upon x square plus 6 is equal to 1 by 2. You do cross multiplication. 2 into x square minus 5 is x square plus 6 into 1. 2x square minus 10 is x square plus 6. x square यहाँ माइनस हो जाएगा, 10 यहाँ चला जाएगा. If x square is 16, x is 4 or minus 4. Therefore, answer is option D. Fifth question. The fourth term from the last term of the finite AP. Typical textbook question है. AP is minus 11, minus 8, minus 5, 49. D कैलकुलेट करोगे, minus 8 minus minus 11, 3 आएगा, plus 3, plus 3. तो प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 करते करते 49 पहुंच जाओगे. तुम करो माइनस 3, उल्टा जाना है. माइनस 3, minus 3, minus 3. Answer, oh yeah, fourth term from the last. This is the fourth term from the end. So this is called manual method, where you don't have to do any calculations. Logically answer मिल जाता है. Answer is 40, option B. Otherwise there is a long method which I've already taught you in the exercises, how to find out using the formula. Sixth objective, in the given figure, angle Q is a right angle and QM is the altitude. PMQ is similar to what? ये पुराने syllabus में से है. This is not from the new syllabus. But I'll tell you a very important trick. This is really very important concept. So please copy it down in your notebook and remember properly. और ये कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो सब समझाऊंगा. First thing, it has to be a right angle. So Q is 90. The main triangle has to be right angle. QM is the altitude. ये भी 90 डिग्री है दोनों तरफ से. Now there are 3 triangles inside this particular figure. If you see carefully. हाँ, एक और चीज याद रखनी है. तो 90, 90, 90. If P is a dot, तो यहां पे डॉट आएगा, ये छोटा एंगल. If R is a cross, तो यहां पे क्रॉस आएगा, ये छोटा एंगल. Now, as I was saying, there are 3 triangles hidden inside this. One is the biggest triangle, another is the medium triangle, and third is the smaller triangle. Biggest triangle के अंदर 90 है Q, डॉट है P, क्रॉस है R. वेरी इजीली विजिबल. बट ये जो ट्राइंगल है, मीडियम ट्राइंगल, उसमें 90 M है. डॉट कौन है? P. और ये है Q क्रॉस, विच यू कैन सी हियर. और जो सबसे छोटा ट्राइंगल है उसमें भी 90 M है, ये ट्राइंगल. डॉट इज Q, क्रॉस इज R. Therefore, PQR is similar to PMQ is similar to QMR, क्योंकि सबके एंगल्स मैच कर रहे हैं.
तो ऑल यू हैव टू डू इज रिमेंबर कि डॉट्स एंड क्रॉसेस कहाँ आएंगे, उसके बाद मैच कर देना है. मैच करते ही तुमको आंसर मिल जाएगा. रिपीटिंग द होल प्रोसेस इन दिस फिगर, Q is 90, M is 90, another M is also 90. P is a dot, तो यहाँ पे डॉट. R is a cross, तो ये क्रॉस. PMQ, राइट एंगल ट्राइंगल, ये रहा PMQ. PMQ में 90 कौन है? M. डॉट कौन है? P. क्रॉस कौन है? Q. हैज़ टू मैच विथ what? तो पहले ही देख लो कि M बीच में 90 डिग्री, P 90 नहीं है, रॉन्ग ऑप्शन. R 90 नहीं है, रॉन्ग ऑप्शन. R 90 नहीं है, रॉन्ग ऑप्शन. M is 90, answer is QMR. And when you see QMR, draw QMR, तो M 90, डॉट कौन है? Q, क्रॉस कौन है? R. PMQ, QMR are similar triangles. That is how you solve this sum. Perimeter of a triangle with vertices 0, 0, 5, 0, 0, 12. This is a very logical question. 9th standard में सीखा था कि ग्राफ पे पॉइंट्स कैसे रखते हैं. 0, 0 is here. 5, 0 is here. 0, 12 is here. You don't need real measurements. This is the triangle. 0, 0 और 5, 0 के बीच में 5 का डिस्टेंस है. 0, 0 और 0, 12 के बीच में 12 का डिस्टेंस है. एंड दिस इज 90 डिग्री. Question is perimeter. If this is 90, it's a right angle triangle. If it's a right angle triangle, 5, 12, 13 pi tha. Therefore, perimeter of the triangle is 5 plus 12 plus 13, 30. Eighth objective. Root of 1 minus sine square plus cos square is 0. Root of 1 minus sine square plus cos square is 1. 1 minus 1 is 0. Root 0 is 0. The four sides of quadrilateral ABCD are tangential to a circle. सर्कल को टच करके एक क्वाड्रिलैटरल है. Something like this. It is called A, B, C, D. When you find this figure, a formula should come into mind. AB plus CD साम सामने की दो साइड का टोटल इज इक्वल टू AD plus BC सामने की दो साइड्स. AB 7.2, CD question mark, DA AD 6.9 and BC is 8.5. CD is 6 plus 8 14, 15.4 ये टोटल है, माइनस 7.2. Answer is 8.2. Very, very simple objective. Tenth question. The area of minor sector having radius r and angle alpha. Minor sector ये होता. Angle is alpha. Radius is r. Formula is pi r square theta upon 360. R तो r है but theta is alpha. Pi r square alpha upon 360. Pi r square alpha upon 360. The radius and height of the cylinder are 35 centimeters each. Then the CSA of the cylinder is dash.
radius and height of cylinder 35, radius 35, height 35, cylinder जो कुछ ऐसा दिखता है, CSA, CSA formula 2 pi r h, 2 pi r h, 5 2s are 10 into 22 into 35 is equal to 220 into 35. 35 into 220, 7700 is the answer. Some observations are arranged in ascending order. Ascending order आते ही median चमकना चाहिए. Median first, अब ये ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए, मैं लिख रहा हूँ डेटा असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी किया हुआ है. द डेटा इज गिवन एज बिलो और अबव. दिस इज द डेटा. अब अगर मैं खुद मीडियन ढूंढने बैठूं तो कैसे मिलेगा? फर्स्ट लास्ट कैंसल, फर्स्ट लास्ट कैंसल, फर्स्ट लास्ट कैंसल. दो बचे वो कैंसिल नहीं कर सकते. यू हैव टू ऐड देन डिवाइड बाय 2. 2 कॉमन. According to my calculation, the median is x plus 6. According to their calculation, the median is 35. Therefore, I will say x plus 6 is equal to 35. X is 29. Answer. Thirteenth question. The probability of a leap year having 53 Fridays. Normal year has 365 days. Leap year has 366 days. 52 weeks are there in a year. Into 7, 364. तो कभी भी 52 वीक्स के बाद साल ख़त्म नहीं होता. एक साल के अंदर 52 वीक्स प्लस एक दिन एक्स्ट्रा होता है. और लीप ईयर है तो 52 वीक्स प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा होता है. 52 फ्राइडेज तो होने ही वाले बिकॉज 52 फुल वीक्स आर देयर. सो 52 फ्राइडेज विल कम, बट 53rd फ्राइडे आएगा कि नहीं उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/7. और लीप ईयर है तो 2/7. सो आई एक्चुअली एक्सप्लेन 2 क्वेश्चंस. लीप ईयर है 2/7 इज द आंसर, ट्रू. नॉर्मल ईयर है नॉन लीप तो 2/7 नहीं 1/7 है. The graph of y is equal to 0 represent y-axis, that is false, and this is straight from the 9th standard. Axis का भी इक्वेशन होता है. तो y-axis का इक्वेशन है x is equal to 0 और x-axis का इक्वेशन है y is equal to 0. Remember this. The graph of y is equal to 0 represents the y-axis is false. The roots of quadratic equation so and so are 3 and 4. Simple case of middle term splitting. 12 को split करो तो 3 4 जा 12 होता है. 7 हो जाएगा. 3 plus 4 7, बट मुझे -7 चाहिए तो I'll take -3 and -4. -3x -4x plus 12. x common x -3 -4 common x -3, x -3, x -4. Therefore, the zeros of the polynomial or solution or roots, जो बोलो, is x is equal to 3 and x is equal to 4. Answer is true.
the vertices of triangle so and so, then coordinates of centroid are so and so. सेंट्रॉइड कैलकुलेट करो. सेंट्रॉइड का अल्फ़ाबेट है जी. सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3, 7 प्लस 7 प्लस 3 बाय 3, कॉमा 6 प्लस 3 प्लस 3 बाय 3. Therefore, according to my calculations, the centroid is 17 by 3, 4. उन्होंने लिखा है 17 by 4, 4. Therefore, the answer is false. The ratio of the surface area of two spheres is 1:2. दो स्फीयर है, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा. उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर is 4 pi r square. दूसरा स्फीयर है तो 4 pi r square, क्योंकि रेडियस अलग होगा. And they are saying that this ratio is 1:2. 4 pi cancel, r square upon r square is 1/2. तो r upon r कितना? 1/√2. Now the main question. Find the ratio of their volume. Volume upon volume find करना है. Volume का formula is 4/3 pi r cube. नीचे वाले का 4/3 pi r cube. 4/3 pi cancel. r क्यूब को मैं r स्क्वायर इंटू r लिख सकता हूँ. Therefore, r square upon r square is 1/2 and r upon r is 1/√2. Answer is 1/2√2, which means the ratio is 1:2√2. ये 2 मार्क के सम से कम नहीं है. भले ऑब्जेक्टिव में. प्लीज शो मेथड व्हेन यू आर सॉल्विंग one word or one line answers. The mean of 5 observations is 27. The first sentence can be written like this. Mean is 27. कितने observations है? 5. Mean का formula sigma xi upon n. This is all from my video which is been created. It is called raw data. तो statistics के objective solve करने के लिए raw data का video ज़रूर देख के पक्का कर लेना. 5 into 27. Sum of observations is 135. Including one new observation, the mean of all the 6 observations is 29. अब एक नया ऑब्जर्वेशन ऐड कर दिया तो 6 ऑब्जर्वेशन हो गया और मीन चेंज हो गया. तो आई विल रिपीट द होल प्रोसेस. मीन बन गया 29, ऑब्जर्वेशंस हो गए 6. मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. 29 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन 6. 174 हो गया. टोटल चेंज हो गया. तो पहले टोटल 135 था, बाद में टोटल 174 हो गया क्योंकि एक 6th ऑब्जर्वेशन ऐड किया गया है. वो 6th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 174 minus 135. Answer is 39. The newly included observation is 39. 19th question.
The prime factorization of 27,300. You have to be smart about this. 27,300 को फैक्टराइज करने के लिए 273 इंटू 10 अलग कर लो. 10 is 2 5 10 is 2 5 all you have to worry about is 273. इसके अंदर निकला 3 7 और 13. Therefore, according to my calculation, 2 है 2 बार, 3 है 1 बार, 5 है 2 बार, 7 है 1 बार, 13 है 1 बार, and they are saying this is the answer. 2 raised to a, 3, 5 raised to 2, b, 13. इसको कहते हैं एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन. एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन मतलब डायरेक्ट कंपेयर करो तो पता चल जाएगा कि a 2 है, a इज इक्वल टू 2 एंड b 7 रेज टू 1 मतलब 7 है. तो a टू b 7, तो b रेज टू a का आंसर क्या? b रेज टू a means 7 raised to 2. Final answer is 49. 20th objective. Is 0.5 a root of the equation so and so? 0 or not 9 स्टैंडर्ड में था, ये भी सेम है, रूट और नॉट. तो एक्स स्क्वायर माइनस 0.25 में x की जगह पे 0.5 डालो, 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.25 minus 0.25 0. Answer is yes, 0.5 is the root of the equation. वन बाय अल्फा बीटा, वन बाय बीटा गामा, वन बाय गामा अल्फा का एलसीएम लो. नीचे आएगा अल्फा बीटा गामा, ऊपर आएगा अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा, ये. सो इन दिस क्वेश्चन वंस यू टेक द एलसीएम दिस इज द फॉर्मेट. अब ये तो है सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस डी बाई ए, माइनस माइनस प्लस, ए कैंसल, बी बाई डी बचा. आंसर इज बी बाई डी. Alpha into beta into gamma is minus d by a. It's a direct formula. Tan theta is dash. 1 minus cos square is sin square. And root of sin square is sin. तो 24th का आंसर यहाँ से मिल गया. और sec square minus 1 is tan square. Sec square minus 1 is tan square. Tan square का रूट is tan. ये रहा tan. Thank you so much.